Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Helawat, and we are doing the chapter 2, that is microbial world. In the previous module, dear students, we have talked about the antibodies and the vaccination process. And now we know that vaccination helps in developing the antibodies in our body, and those antibodies, they fight with various germs and protect us from the diseases. Right? Now in this particular module, we'll be talking about the different types of diseases. Now before we start with different types of diseases, we must understand what does the word disease means. So disease means disturbed with ease. डिजीज का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जब हमें बहुत आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता है. ओके, राइट? Okay, now we can categorize the diseases into two basic types. One is communicable disease, another is non-communicable disease. Communicable disease means the disease that spreads from infected person to a healthy person. ये ऐसी diseases है जो एक patient से एक healthy person को spread होती हैं. And these are always caused by external factors. ये हमेशा जो है external factors की वजह से होती हैं बेटा जी. They are caused by external factors. External factors. So one, they spread from infected person to healthy person, and second, they are caused by the external factors. Okay? Maybe air, water, food like. Non-communicable diseases जो हैं, they do not spread from one person to another. Okay, they do not spread from one person to another, and they are always caused by the internal factors, like you may have low blood pressure, you may have high blood pressure, you may have sugar problem. So all these diseases, they are because of some internal factors or some internal. So we have two different types of diseases, communicable and non-communicable diseases. Now dear students, we always must understand that and non-communicable, they are separate. Right? Infectious word means the diseases that are contracted by germs. जो वो बीमारियां जो germs फैलाते हैं, वो आपकी infectious diseases है. Communicable diseases वो होती हैं जो एक person से दूसरे person में spread होती हैं. So we must understand that not every infectious disease is communicable. तो जो disease germs cause करते हैं जरूरी नहीं है वो हर time communicable हो. Like for example, we can take the example of tetanus. Tetanus जो है बेटा, this is caused by a bacterium which is called as Clostridium tetani. As you can see in this Clostridium tetani, ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से tetanus disease होती है, लेकिन ये communicable नहीं है. So ये infectious disease है, but this is not a communicable disease. Okay? Now, how communicable diseases spread from person to person? देखिए अभी हमने बात की है कि communicable diseases जो हैं, they spread from one person to another. So now let's understand how these diseases they spread from one person to another. Okay? Right. देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस या जर्म्स. ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं वी कॉल देम एज पैथोजेंस और जर्म्स. और जो जर्म्स है बेटे वो हमारी बॉडी में दे कैन एंटर थ्रू डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके हैं उनके हमारी बॉडी में एंटर करने के. दे में एंटर थ्रू दी एयर, वो एयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में. They can enter through air, they can enter through water, they can enter through food or the physical contact, and they might enter through some insects or animals, right? ठीक है, so contaminated food से उनकी entry हो सकती है, air से उनकी entry हो सकती है, okay, right? So air, water और direct contact से उनकी entry हो सकती है, okay? So communicable जो diseases हैं that may spread through different ways. और जो communicable का example है बेटा, you can take several examples like cholera, typhoid, hepatitis, common cold, chicken pox, TB, AIDS. These are all your communicable diseases. Okay? They always spread from one person to another, right?
Now, as I was taking, take some examples of diseases that spread through air. कुछ examples लेते हैं जहां diseases air से spread होती हैं. How does this spread through air? ठीक है, like cough. देखिए, जब भी कोई infected person बेटा कफ या स्नीज करता है, so large droplets, fine droplets of water introduced into the air. देखिए, मुझे छींक आ रही है या मुझे खांसी आ रही है, तो when I am sneezing, when I am coughing, small droplets of water they will be thrown into the air. तो जब मुझे छींक आ रही है तो मेरे मुंह से बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चली जाएंगी. एंड इफ देयर इज एनी पर्सन हु इज पासिंग नियर बाय और वो मेरी ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेते हैं, सो इन दैट केस द माइक्रोब विल एंटर द person and the person will also become infected. Right? So this is how diseases spread from infected person to healthy person. So these diseases may be common cold, may be tuberculosis. तो आपकी जो common cold है, TB है, ये एयर के थ्रू स्प्रेड होती है. मतलब माइक्रोब जो है वो एयर के थ्रू एंटर करता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में. ओके, now let's come to the vector-borne diseases. Now before we start with vector-borne diseases, let's understand what is a vector. कोई बता सकता है बेटा what is a vector? Anybody? Vector जो होते हैं बेटा, these are small animals. These are small animals that carry germs they carry germs from infected person to healthy person. From infected person to healthy person. हेल्दी पर्सन. देखिए, यू मस्ट हैव सीन हाउस फ्लाई. आपने हाउस फ्लाई को देखा है, मॉस्किटोज को देखा है. ये बेसिकली डिजीज कॉज नहीं करते हैं. दे डू नॉट कॉज डिजीज, बट दे एक्चुअली कैरी द जर्म्स दैट कॉजेज डिजीजेस. ये उन जर्म्स को कैरी करते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीजेस कॉज करते हैं. राइट? तो ये इंसेक्ट्स जो हैं, आपके फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, कॉकरोचेस हैं. They are basically the carriers or the vectors. Now what diseases they spread? Like they can spread typhoid, malaria, dengue, cholera. ये diseases को spread करने में help करते हैं. Malaria जो है बेटा, this is caused by a protozoa which is called as plasmodium. Malaria जो है, जो causative agent है malaria का, वो plasmodium है बेटे. And plasmodium is transferred from one person to another by mosquito. Okay? Similarly, dengue fever, the dengue fever, that is also causes that is also caused by dengue virus. Dengue virus होता है जो ये spread करता है disease, लेकिन इसको एडीज मॉस्किटो जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करता है. ठीक है? This means we have to be very careful. इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास जो है वैक्टर्स का ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज वैक्टर्स दे हेल्प इन स्प्रेडिंग डिजीजेस. ओके, तो हमें आसपास जो डर्टी प्लेस नहीं रखना चाहिए. गार्बेज और एनिमल वेस्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना चाहिए. किसी भी फूड को अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए. ओके, सो दैट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कैन सिट ओवर इट. क्लियर? यस. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं बेटा, अगर हम गंदा पानी पीते हैं, even then we can have certain diseases. अगर जो पानी हम पी रहे हैं उसके अंदर germs present है, that is not clean water, so even then we can have diseases. So the simplest way to kill germs from water is to boil it for 10 minutes. तो simple तरीका ये है कि हम पानी को उबाल दें, boil कर ले उसे 10 minutes के लिए, and then we can cool it and then we can drink it. Now let's see these. This is an Aedes mosquito that spreads Anopheles mosquito that spreads the Malarian protozoan from one person to another. This is an Aedes mosquito. So both of them, they are very, they are very dangerous diseases, and these are spread by these two mosquitoes.
बेसिकली दे एक्ट एज वैक्टर्स। ये दोनों जो मॉस्किटो आपको नजर आ रहे हैं ये वैक्टर्स की तरह काम करते हैं। ये पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं, ये जर्म्स को मूव करते हैं एक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर डिजीजेस, सम एग्जांपल्स वी टेक इट। देखिए जैसे चिकन पॉक्स, आई होप यू हर्ड अबाउट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, ओके, एंड हाउ डज इट ट्रांसफर्स? सो इट ट्रांसफर्स थ्रू एयर। ये एयर से ट्रांसमिट होता है और हम क्या कर सकते हैं इस डिजीज से बचने के लिए? वी शुड हैव ऑलवेज टेक अ वैक्सीनेशन। कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। It spreads from one person to another through contaminated food and water, and again we should go for the vaccination. Then this is a list of certain diseases. You can easily note it down and you can understand. Like let's discuss few. Common cold है, this is also caused by virus बेटा, air से transmit होती है, that is why, and preventive measure ये है कि हमें अपने हाथ hand wash करके रखने चाहिए, infected person से दूर रहना चाहिए, okay? Malaria we have talked about, this is caused by a protozoa. Mosquitoes जो हैं they transmit the germs, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? We should always does not allow the water to stand at near places. आसपास घर साफ रखना चाहिए, कहीं भी जो है रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए. Mosquito net we should use. We should use Odomos repellents हम use कर सकते हैं, right? Then there is a polio. Polio is also caused by a virus. And it transmitted from one person to another through air or water, and we should go for the vaccination. So we have a list of these. Kindly note it down, and you should learn the some of the examples. Okay, at least 3 or 4 examples you should remember. Now coming to the certain diseases that are caused in animals and plants. देखिए अभी जो हमने diseases की बात की है बेटे, these are the diseases which are caused in human beings. ये जो human beings में होती हैं diseases, अब हम कुछ ऐसे examples देते हैं जो microorganisms की वजह से plants या animals में होती हैं. तो कुछ diseases जो plants और animals में होती हैं, चलिए let's talk about certain animals. Animals में one disease which is called as foot and mouth disease. कौन सी डिजीज कहते हैं हम इसको? फुट एंड माउथ डिजीज. दिस इज कॉज्ड बाय वायरस. नाउ इन दिस केस इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट और थ्रू एयर. और जनरली ये जो डिजीज है ये कैटल्स में ऑब्जर्व की जाती है. एंड दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. ग्रेजिंग एनिमल्स में होती है, देखिए आप ये देख सकते हैं बफेलो काउज ये ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं. सो इनमें कैटल्स में होती है फिश ये डिजीज. देन इज फिन फुट. ठीक है, फिन फुट, दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. और ये डिजीज ट्रांसमिट होती है पानी के थ्रू, गंदे पानी के थ्रू, या अगर इंजरी हो रखी है देन. ये जनरली ये जो प्रॉब्लम है ये फिशेस में ऑब्जर्व की जाती है बेटा. दिस इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन फिशेस. ओके, yes, this you can see foot and mouth disease. This is you can see observe here in the pictures. Now let's have some examples of diseases that are present in plants. The first disease is citrus canker. Just look at this the leaves of the plant. In this disease the leaves of the plant they become brownish. ठीक है, पैची एरियाज हो जाता है बेटे, बीच बीच में से लीव्स जो है सूख जाती है. और ये डिजीज को कॉज करता है बैक्टीरियम और ये एयर के थ्रू मूव करती है. देन देयर इज येलो वेन मोज़ैक डिजीज. आप यहाँ पे देखिए बेटा सेकंड जो पिक्चर है, देखिए लीफ जो है येलो टर्न हो गई है और उसकी वेन्स जो है बहुत क्लियरली विजिबल. दीज आर द वेन्स. ठीक है, आप लीफ देख सकते हैं, लीफ जो है बिल्कुल येलोइश हो गई है, क्लोरोफिल कंटेंट उसमें रिड्यूस हो गया है और उसकी वेन्स बहुत क्लियर नजर आती हैं. तो ये डिजीज वायरस से होती है और इंसेक्ट्स इस डिजीज को स्प्रेड करते हैं. देन देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज विच इज कॉल्ड एज व्हीट लीफ रस्ट. ये फंगस से होती है, फंगस है जो कॉज करती है. और इसमें क्या है, जो व्हीट की जो लीव्स हैं, यू कैन सी देयर इज अ सूटी डिपोजिशन. आप उसमें देखें इस तरीके के ड्रॉपलेट्स उस पर बन जाते हैं लीव के ऊपर, राइट. ये फंगस है जो उसकी लीव्स को खराब कर देती है. एंड दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर और सीड्स. ये डिजीज जो है एयर और सीड्स के थ्रू स्प्रेड करती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीबडी. So in this video we have talked about some diseases which is caused by microbes in human beings, some diseases which are caused in plants, some diseases that are caused in
animals. Okay? Now coming to the homework for today. First of all, you will make notes of this topic. You will read the page numbers 29 and 30, and you will also complete the related question answers. You make beautiful, tables in your notebook, right? Yes, and if there is any doubt, any problem, you can share it with me, bete. Okay? Okay, bye everyone.